Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today I am here with my third lecture of spoken activity for class 4th. In our previous lecture we read some sentences that we need to speak at canteen. But today we read some sentences that we may speak in school office. So let's start students. Sentence number 1 is, Sir, please give me the fee voucher. सर प्लीज़ गिव मी द फ़ी वाउचर. सर बराए मेहरबानी मुझे फ़ी वाउचर दीजिए. मैम दिस इज़ आवर डेली रिपोर्ट फाइल, साइन इट प्लीज़. मैम दिस इज़ आवर डेली रिपोर्ट फाइल, साइन इट प्लीज़. मैम ये हमारी डेली रिपोर्ट की फ़ाइल है, इस पर साइन कीजिए. एंड द थर्ड सेंटेंस, आई एम नॉट फ़ी डिफ़ॉल्टर सर. आई एम नॉट फ़ी डिफ़ॉल्टर सर. सर मैं फ़ी डिफ़ॉल्टर नहीं हूँ. And the sentence number 4, Sir, I have stomachache. Give me some medicine, please. Sir, I have stomachache. Give me some medicine, please. Sir, मेरे पेट में दर्द है, मेहरबानी से मुझे दवाई दीजिए. And our last sentence is, Sir, please call at my home. I am feeling unwell. Sir, please call at my home. I am feeling unwell. सर मेहरबानी से मेरे घर पे कॉल कीजिए, मैं बेहतर महसूस नहीं कर रहा. नाउ स्टूडेंट्स आई विल रिपीट इट. सर प्लीज़ गिव मी द फ़ी वाउचर. सेकंड, मैम दिस इज़ आवर डेली रिपोर्ट फाइल, साइन इट प्लीज़. थर्ड, आई एम नॉट फ़ी डिफ़ॉल्टर सर. फोर्थ, सर आई हैव स्टमक एक, गिव मी सम मेडिसिन प्लीज़. फिफ्थ, Sir, please call at my home. I am feeling unwell. I hope students you will easily learn these sentences. Write these sentences on your binders and try to write 2 more sentences that you may speak in school office. And the message of the day, good things come to those who wait, but better things come to those who work for it. Allah Hafiz.